आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे मार्केट ने ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया। नैरेटिव क्या है? ट्रेडिशनल ब्रोकिंग इज फिनिश्ड, जीरोधा और ग्रो ने गेम ओवर कर दिया है। बट वॉट इफ द मार्केट इज कंप्लीटली रॉन्ग? वॉट इफ आई टेल यू यू आर गेटिंग अ बिजनेस एट अ वैल्यूएशन जब मार्केट कैप इज इक्वल टू कैश ऑन द बुक्स? मतलब यू लिटरली गेटिंग द बिजनेस फॉर फ्री। एंड नॉट जस्ट दैट, दिस डेड बिजनेस जिसको मार्केट ने 60% से गिरा दिया है is generating 150 to 200 crores cash every single year. So the real question is, what is the market missing? Bull market में सबको multi-baggers चाहिए होते हैं, but real multi-baggers are made in bear markets. Before we dive deeper into the stock, quick introduction about me. I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments, and I previously worked with Goldman Sachs in their equity research team. My goal is simple, to bring institutional grade research to you. If that's something you value, subscribe and stay tuned. गेटिंग बैक, आज हम बात कर रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की। द स्टॉक इज डाउन फ्रॉम 150 रुपीज टू 60 रुपीज, ऑलमोस्ट अ 60% क्रैश, एंड नथिंग हैज चेंज इन द बिजनेस. थिंग्स हैव ओनली गॉटन बेटर. Obviously, this is a capital market stock, so it is going to be volatile when the markets are not doing well. First, let's break one big myth for you. आपका अकाउंट ग्रो या जीरोधा पे होगा, बट बी ऑनेस्ट, डू यू हैव अ रिलेशनशिप देयर? कोई आपको कॉल करता है, एडवाइस करता है? नो. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर जियोजीत विंस. डीप स्टिकी क्लाइंट रिलेशनशिप्स. अभी हम वन बाय वन वेरियस बिजनेसेस जिसमें जियोजीत ऑपरेट करता है देखेंगे. फर्स्ट, ब्रोकरेज प्लस एमटीएफ. यस, ब्रोकरेज इज सिक्लिकल बट इट्स नॉट डाइंग. इंस्टेड ब्रोकरेज बिजनेस इज ओनली एक्सपैंडिंग. रेवेन्यू 180 करोड़ से 300 करोड़ हो गया इन द लास्ट 6 years. बट द रियल गेम चेंजर इज एमटीएफ. लोन बुक 190 करोड़ से 700 करोड़ हो गया इन द लास्ट 4 years, which is a 3 to 4x growth. This is basically a lending business with 10% yield. Second, mutual fund distribution. Geojit has 17,000 crores of AUM, 1% yield के साथ में. That's a 150 to 170 crore revenue every year. And this business has grown 3x in the last 5 years. Why? Simple. Once the client trusts you, wallet share increases. Third, PMS and AIFs. They have a 1,500 crore AUM, which has grown 6x in the last 5 years. This business has a high margin and high scalability. These are their own funds. They are not distributing any products here. Now the most important shift, recurring income, which is basically वो business जो annuity की तरह आता जाएगा without working on it. 2021 में से 15% था, आज 32% है. मतलब the business is structurally improving. Dependence on brokerage is reducing. Now comes the most interesting part, valuations. यहाँ दो चीज़ें देखो उनकी बैलेंस शीट में. Loans and advances, which is the MTF book, which gives a 10% yield. Second, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो टोटल 1400 करोड़ बनता है. कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़. मतलब आप पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट फ्री में ले रहे हो और वो बिजनेस हर साल 150 टू 200 करोड़ का कैश जनरेट कर रहा है. स्टॉक क्यों गिरा? 60 टू 70% फॉल था, वो भी लो वॉल्यूम्स पे. मार्केट सेंटिमेंट्स ब्रूटल रहे इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. बट बिजनेस इंटैक्ट है और भी स्ट्रॉन्गर हुआ है. अगर आप शेयर होल्डिंग भी देखो तो मार्की इन्वेस्टर्स लाइक आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और बजाज म्यूचुअल फंड दोनों के पास 5% स्टेक है. प्रमोटर सीजे जॉर्ज, उन्होंने अपना स्टेक 18% से बढ़ा के 20% कर दिया इन द रीसेंट मंथ्स. सो ओवरऑल दिस इज अ क्लासिक डीप वैल्यू प्लस इंप्रूविंग बिजनेस स्टोरी. मेरे लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है. हेड्स यू विन, टेल्स यू डोंट लूज मच. परमानेंट डाउनसाइड का स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, मे बी अनदर 10% फॉल, बट अपसाइड 200 to 300% over time. Do subscribe to our channel if you like this video, share this with your investor friends,